Good evening. Welcome to this edition of Northeast Diary. Here we bring you the latest developments from India's unexplored Northeast region. Friends, now December is upon us. We hope that our listeners are keeping themselves warm as the chill of winters sets in. It is the month when many people plan their holidays. This time, we urge our listeners to head over to Meghalaya's Tura. We will talk about the scenic locale in our city segment. The 1st of December is observed as the raising day of the Border Security Force. In our personality section, we will talk to Ratnesh Kumar, Commandant BSF 120 Battalion, who will delve on the many challenges faced by the BSF in keeping the borders safe at Tripura. The youth of Mizoram is best known for their love of music. They are not simply music lovers, rather, most of the youth are singers and musicians. Also, the sylvan settings and the bewildering landscape of the state have made the Mizo youth develop a zeal for photography. Recently, 2 separate initiatives have come up to encourage the Mizo youth more in the field of music and photography. We have more details from a correspondent from Aizawl. Mizoram Youth Commission MYC is a vital organization of the state government that looks after issues of welfare and development of the youths of the state. The MYC plays a key role in formulating welfare schemes for the youths, and most importantly, this organization takes initiatives round the year for the promotion and skill development of the youth in performing art and creativity. Recently, Mizoram Youth Commission signed a Memorandum of Understanding with the Asian Music Network named Music Connect Asia to provide exposure for Mizo singers and musicians. According to the officials, the MOU has been signed because the Music Connect Asia is an artist-driven venture for Asian singers and musicians and has been working for connecting and creating avenues world over. With the signing of MOU, the musicians from the state would get opportunities to get wider exposure and can participate in worldwide music festivals and music markets. On the similar line of promoting the local talents, Mizoram Youth Commission has taken up an initiative of organizing a 5-day photographic salon at Aizawl recently. While inaugurating the photographic salon, the MYC chairman, Dr. Vanlal Chanpuya, said that the main focus of MYC is to find talents of young youths and nurture them to scale up their skills worthy of employment. On the occasion, Dr. Vanlal Chanpuya expressed hope that the participating photographers would excel in the competitive fields in national and international platforms. He further informed that the MYC has tied up with the National Academy of Photography and Federation of Indian Photography with the objective that these 2 national organizations will help to hone the skills of Mizo photographers so that they can take up photography as a successful career. An event of exhibition cum selling, the salon exhibited 119 pictures of different genres like nature, flora and fauna, culture, women, rural life, and it was jointly organized by Mizoram School of Photography and Photographic Club of Mizoram. It had a participation of 37 photographers from different areas of the state. For Northeast Diary, this is Irene from Aizawl. Technology has become a vital tool for the police to serve the people by way of preventing crime and providing services. Keeping this in view, the Nagaland Police has launched a mobile application, Call Your Cop, for facilitating the users to get in touch with the law enforcers anywhere in the state. Telling us more about this initiative is Asuno, our Kohima correspondent. Director General of Police Nagaland T. John Longkumar on Monday launched the Call Your Cop mobile application at the police headquarters in Kohima. Today in this world, the IT, the internet, the mobile, that is all pervasive. We cannot do without it. Sometimes it's used
for criminal activities, for wrongdoing, for harassment of women. So it is only proper that we develop an app which will help us to help all the citizens. So this initiative is also in keeping with the total modernization of the police department, not only in Nagaland, but all over India. The mobile application is one among the important initiatives by the Nagaland police as it aims to bridge the gap between the police and the citizens. The Call Your Cop app has the contact numbers of Nagaland police officers along with other features including alerts, tourist tips, SOS and emergency numbers, nearest police stations and search feature. It aims to provide a single repository for storing contact information of all Nagaland police human resources. It will enable users to search and find police officers, police station details with an interactive map besides other features. The mobile application is now available on the Google Play Store for Android user and will be available for iOS users soon. For Northeast Diary, this is Asunyo from AIR News, Kohima. A youngster from Shillong has launched a website that seeks to raise issues creatively through comics, stories, and other means. Our Shillong correspondent has the details. Babador Dakhar, an alumnus of the National University of Judicial Sciences, Kolkata, and Oxford University, returned to his home state to chase his dreams in his own special way. Merging creativity and vital social issues, he launched Kakatain Media. Kakatain Media, or Half and One, is a media production entity that produces and publishes original, quality and slightly offbeat content, putting the culture of the entire Northeast India at the forefront. It is a space for cartoons and comics, journalism and narrative non-fiction, poetry and fiction. It is a platform for art and creativity. This media platform works towards capturing a slice of the original, alternative and non-mainstream content industry and seek paying readers, viewers and listeners, and the numbers they get on their social media platforms are a bonus. So the bigger entity is called Kakatain Media. Kakatain Media means a word, media, and it's supposed to be a media and production entity. And at the heart of Kakatain Media is Half and One. Half and One is a platform for journalism and narrative non-fiction. It's a platform for short stories and poetry. It's a platform for comic books and cartoons. It's now a platform for videos and documentaries and podcasts. So all the things that we consider to be creative and original, we try and do at Kakatain Media and then Half and One. I knew that I wanted to create something that was nice and substantial in Shillong. And I knew that what I wanted to create had to do with things that were creative and things that were challenging to me, things that I found fun. And, writing and comic books and videos and podcasting. Ultimately, what sets the organization apart is its commitment to bringing stories, places unknown and unearthing hidden talents from the region. This is Rustam for Northeast Diary from AIR News, Shillong. The Serenity Run 2021, a high-altitude endurance full marathon of 42 kilometers, and the Serenity Ride, a mountain biking competition, which was recently organized in Sikkim, received a warm response from participants. It was the first such event involving high altitude organized in the state. We have a report. The Serenity Run 2021 was flagged off from Tasi Viewpoint, Gangtok and ended at the height of 12,400 feet at the popular tourist spot of Changmu or the Changu Lake. Around 100 long-distance runners and 70 cyclists participate in the event, which was flagged off by National Boxing Coach and Dronachari awardee Sandhya Gurung. Organizer Uday C. Rai says the objective and his plan to take the event to higher level. The mountain bike competition was started from Chongye towards Changu Lake, and the marathon started from Tasi Viewpoint to Changu Lake, from 6,500 feet to 12,000, approximately 400 feet. The event was flagged off by Dronachari awardee Mrs. Sandhya Gurung. The main aim of organizing the event is to inculcate spirit of competition among our youth by providing them a new platform and also test the physical endurance of athletes from the region. This event would further encourage our many upcoming talents from region to highlight their potential and experience competition, which will further enable them to take part in bigger competition all over the world. The oldest participant in the competition was 60 years in cycling, and the marathon, the youngest was
13 years old. The winner of the marathon completed the kilometers, this whole thing in 3 hours 57 minutes, while the cycling competition completed this 42 kilometers in 2 hours 57 minutes. And we are hopeful that this event will grow up to become a global event, and it has a potential to achieve a higher goal, and this event will eventually support and help the young generation to achieve higher and bigger goals in life. Shanda Gurung appreciated the initiative for providing a big platform for local athletes and for encouraging the young generation to take up sports and adopt a healthy way of living. With Cycle Sarkar and Sagar Chetri, this is Diliram Dulal for Northeast Diary from AIR News Sikkim. It is because of our soldiers that we sleep at home peacefully. It is because of these brave hearts and their sacrifice that we could play Holi, celebrate Diwali, or Eid gracefully and peacefully. December 1st is celebrated as the raising day of our border security force. In connection with this day, AIR Northeast Diary brings to our listeners a special interview with Mr. Ratnesh Kumar, Commandant BSF 120 Battalion, by our Agartala correspondent Chandan Lekha Paul on the role of BSF, tasks and the challenges they face in respect to the Indo-Bangladesh border at Tripura. बल है इन बलवानों में, मेरे देश की वीर जवानों में, ये सीने पर गोली खाते हैं, दुश्मन को धूल चटाते हैं, ये खून से होली मनाते हैं, वे जीत कर वापस आते हैं, दुश्मन के घर तिरंगा लहराते हैं या खुद तिरंगे में आते हैं, वीर शहीद कहलाते हैं। 1 दिसंबर बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना दिवस। हमारे स्टूडियो पर आमंत्रित है बीएसएफ की 120 नंबर बैटालियन के कमांडेंट श्री रत्नेश कुमार महोदय। नमस्ते श्री रत्नेश कुमार जी, हमारे स्टूडियो में आपकी स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद मैम। पहले आपसे मैं जो प्रश्न करना चाहती हूँ वो है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब और क्यों हुई? 1 दिसंबर 1965 से पहले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की है, उसके सुरक्षा की देखरेख की जिम्मेदारी सीमावर्ती राज्यों के सशस्त्र बल या पुलिस थी, उनके पास होती थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें देखा गया कि राज्य की जो पुलिस है, सीमावर्ती राज्यों की पुलिस है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग पुलिस होती थी, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। तो इस कमी को देखते हुए एक परिकल्पना हुई कि एक ऐसा बल बने भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर जो विशेष रूप से प्रशिक्षित हो, जो युद्ध के समय में भी काम कर सके, पीस टाइम में जब शांत है उस समय भी वो कार्य कर सके। इन सब परिकल्पनाओं के आधार पर 1 दिसंबर 1965 को भारत की सीमा को सुरक्षित करने के लिए सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया। शुरू में यह बल 25 वाहिनियों के साथ अस्तित्व में आया। इस बल को 6386 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगने वाली हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही 237 किलोमीटर नियंत्रण रेखा की भी देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। तो इस बल का इतिहास या अस्तित्व इसी प्रकार से है। सीमा सुरक्षा बल के रोल और टास्क जो है ये क्या क्या है? तो जैसा मैंने बताया कि परिकल्पना थी कि वो ऐसी बल हो, ऐसा फोर्स का गठन हो जो वॉर टाइम में और पीस टाइम में एक साथ काम कर सके। तो उसी परिकल्पना के आधार पर सीमा सुरक्षा बल को सीमा पे रहते हुए प्रमुख टास्क जो है वो सीमा की पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से इसको गठन किया गया, टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ बॉर्डर, जिसमें हमारे फोर्स को 3 महत्वपूर्ण टास्क दिए गए। पहला था सीमा पर रहने वाले लोगों के दिल में सुरक्षा की भावना पैदा करना। दूसरा टास्क सीमा पार से होने वाले अपराध या किसी भी अवैध घुसपैठ को रोकना। और तीसरा जो महत्वपूर्ण टास्क था, तस्करी और अन्य अपराधों को सीमा पर रोकना। ये तो सीमा पे डिप्लॉयमेंट के दौरान हमारा टास्क था। इसके अलावा भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, विविधताओं से भरा हुआ है, तो जाहिर है कि परिस्थितियां हर जगह अलग अलग होंगी। तो उसके लिए भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमको और भी हमारे लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां और टास्क दिए गए, जिसमें महत्वपूर्ण है आंतरिक सुरक्षा। जब भी किसी राज्य में या किसी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता है और महसूस किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है, तो सीमा सुरक्षा बल को वहां तैनात किया जाता है।
जो हम वहां पे जाते हैं और पुलिस को असिस्ट करते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा में हमारी तैनाती होती है। उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए भी हमारी तैनाती होती है, जिसके उदाहरण में आप पंजाब को, जम्मू कश्मीर को ले सकते हैं। फिलहाल में अभी बीएसएफ जो है हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगी हुई है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के इलाकों में ऑपरेशन कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में सीमा सुरक्षा बल की 3 बटालियन प्रशिक्षित है और कहीं भी कोई भी राष्ट्रीय आपदा आता है तो हमारे 3 बटालियन वहां पे जाती है। वॉर टाइम में भी हमारा जो रोल है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, जिसके तहत हम भारतीय सेना के साथ मिलकर के सीमा के ऊपर, क्योंकि मैंने जैसा बताया हमारी ट्रेनिंग उस तरह की है कि वॉर टाइम में भी हम एक्ट करते हैं, तो वहां पे हम भारतीय सेना के साथ मिलकर के किसी भी ऑपरेशन में हम अपना योगदान देते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें सीमा सुरक्षा बल ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया, काफी बलिदानी भी दिए और जीत का कुछ हिस्सा हमारे सेहरे भी आता है। धन्यवाद आपको। आज की चर्चा में हम जोर देंगे जिस पर, वो है त्रिपुरा में बीएसएफ क्या क्या कर रहा है, क्या भूमिका है, क्या रोल या क्या टास्क है। 1971 16 दिसंबर बांग्लादेश आजाद हुआ और त्रिपुरा जो है उसको 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सीमा सुरक्षा बल वैसे तो पहले से यहाँ पे डिप्लॉय थी। जब ये त्रिपुरा राज्य बना तो त्रिपुरा राज्य का 856 किलोमीटर की सीमा रेखा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है, तो और एक छोटा सा पोर्शन नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो है त्रिपुरा का वो भारत के 2 राज्य के साथ मिलता है, वो है आसाम और मिजोरम। जी, तो अब जाहिर है इतना लंबा सीमा रेखा है तो यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल का रोल और टास्क भी महत्वपूर्ण होगा। हर जगह पे सीमा सुरक्षा बल की आवश्यकता, चैलेंजेज वगैरह होंगी, तो हमारे यहाँ पे त्रिपुरा में भी हमारे पास चैलेंजेज, रोल और टास्क थे, वही रोल और टास्क थे जो हमारे संविधान ने हमको दिया था। अच्छा। जो मैंने बताया, सीमा की पवित्रता बनाए रखने के लिए यहाँ के नागरिकों के दिल में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अवैध घुसपैठ को रोकना, स्मगलिंग को रोकना। साथ ही साथ जब यहाँ पे मिलिटेंसी थी, उग्रवाद था, तो उस समय भी बीएसएफ यहाँ पे तैनात थी और उग्रवाद से निपटने में भी यहाँ पे सीमा सुरक्षा बल ने अपना रोल, बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, इतना बड़ा भूमिका आप लोगों को निभाना पड़ता है, इतना जिम्मेदारी आप पर है, तो त्रिपुरा राज्य में आपने रोल और टास्क को पूरा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मैडम, जैसा अभी मैंने बताया कि त्रिपुरा राज्य के 856 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसमें 518 किलोमीटर समतल और मैदानी इलाका है, 338 किलोमीटर पहाड़ी और जंगली इलाका है। तो दोनों ही इलाके की चुनौतियां अलग अलग है मैडम। तो समतल भाग की चुनौतियां क्या क्या है? जी, त्रिपुरा की अधिकतर आबादी समतल भाग में रहती है, जो मैदानी इलाका है। यहाँ पे जमीन उपजाऊ होने के कारण लोग सीमा रेखा तक खेती करने के लिए जाते हैं। बांग्लादेश के तरफ भी यही स्थिति है, वहां से भी लोग सीमा रेखा तक खेती करने आते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी पॉकेट्स हैं, ऐसे भी इलाके हैं भारत में, हमारे त्रिपुरा राज्य में, जहां पे जो हमारे नागरिक हैं वो सीमा रेखा तक निवास करते हैं। तो जाहिर है वहां पे काफी सारे अपराध भी पनपेंगे। तो तस्करी के अलावा जो वैसे इलाकों में जो अपराध होते हैं उसमें खास करके अवैध रूप से पकी हुई फसल को काट के ले जाना, जो सीमा पार के अपराधी करते हैं। भारतीय गांव में आकर के हमारे नागरिकों के गाय को, पशुधन की चोरी कर लेना, डकैती करना, अपहरण करना, इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। तो सीमा सुरक्षा बल की तैनाती के बाद उस पर कुछ अंकुश लगा, लेकिन हमारे लिए अभी भी इन सब अपराधों को रोकने के लिए काफी सारी चुनौतियां हैं। बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं, मैदानी इलाके, जहां पे तारबंदी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। हाँ। कारण है कि 150 गज के अंदर में हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनसे हमको कंकरेंस लेना पड़ता है कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए। तो बहुत सारे इलाकों में तारबंदी नहीं हुई है, जो कि सीमा पार के अपराधियों के लिए एक मददगार साबित होता है। वो आसानी से आना जाना कर सकते हैं और अपने अपराध को अंजाम दे सकते हैं। जो हमारे तारबंदी वाले इलाके हैं वहां भी बहुत सारे नदी और नालों के कारण गैप्स बने हुए हैं, जो हमारे लिए एक चुनौती है। इसके अलावा
जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए यहाँ पे चुनौती है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच में नस्ली, भाषाई और सांस्कृतिक समानता, इथनिक, लिंगुअल एंड कल्चरल सिमिलरिटी। इसके कारण हमारे लिए ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि अगर किसी घुसपैठिए को हमने पकड़ा भी है, घुसपैठिया है या नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए एक चुनौती है। हमारे जो प्रहरी हैं, सीमा प्रहरी हैं, हमारे जो कार्मिक हैं, क्योंकि ये भारत के अलग अलग राज्य से आते हैं, तो लोकल लैंग्वेज समझने में या कम्युनिकेट करने में मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है। मान लिया हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, पब्लिक समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो उसके कारण वो भी हमारे लिए एक भाषा एक अलग चुनौती है हमारे लिए। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे इलाके हैं जहां पे लोग, हमारे नागरिक जो हैं, सीमा रेखा तक निवास करते हैं, तो वैसे इलाके में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहां पर सीमा स्तंभ, जो बॉर्डर पिलर है, वो घर के बीच में है या सीमा रेखा घर के बीच से गुजर रही है। तो वो हमारे लिए एक, उस इलाकों को में सीमा प्रबंधन हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो समानता है दोनों नागरिक में, और बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जिनका बांग्लादेश में संबंध है, रिश्तेदारी है। बहुत तो भाई बांग्लादेश में रहते हैं, एक भाई बांग्लादेश में, एक भाई भारत में। हम लोगों ने सुना और देखा भी, किसी का सोने का घर है भारत में और खेती है बांग्लादेश में। जी हाँ मैडम, सोने का घर नहीं, आप देखेंगे तो घर के बीच से सीमा रेखा जा रही है, और आधा घर आप बोल सकते हैं भारत में, आधा घर जो है बांग्लादेश में है। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उसके अलावा यहाँ का जो प्राकृतिक परिवेश है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है त्रिपुरा में, जो ये मैदानी इलाका है वो निचला भाग होता है, और यहाँ पे चूंकि 4 से 6 महीने बारिश होती है, तो निचला इलाका, जो समतल इलाका है, पानी से भर जाता है। तो हमारे लिए डोमिनेशन, उस इलाके में ड्यूटी करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो ये मैदानी इलाके की ये कुछ चुनौती। त्रिपुरा में तो पहाड़ी इलाका भी है जी, तो पहाड़ एवं जंगली जो इलाकों, वहाँ की चुनौतियाँ क्या क्या है? जी जी, जो मैंने बताया है कि 338 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा पहाड़ी और जंगली इलाके से मिलती जुलती है। इसमें भारत और बांग्लादेश में भौगोलिक परिस्थिति सेम है। जैसा भारत में भौगोलिक बनावट है, वही बनावट बांग्लादेश में भी है। यहाँ की पहाड़ियां कच्ची है और जंगल ट्रॉपिकल रेन रीजन होने के कारण जंगल काफी घने हैं। बारिश बहुत होने के कारण कच्ची पहाड़ियों में लैंडस्लाइड होता है। जी, तो जो पहाड़ी और जंगली इलाका है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। कुछ यहाँ के जो मूल निवासी हैं, ट्राइबल जनजाति के लोग हैं, वो उस इलाके में छोटे छोटे गांव में रहते हैं। सड़कों का वहाँ पे अभाव है, और जो सड़कें हैं भी वो बारिश के दौरान वो टूट जाती हैं लैंडस्लाइड से। तो उन सब इलाकों में विकास की कमी है। उसके कारण उन इलाकों में बिजली का अभाव है, संचार सेवा का अभाव है। तो ये हमारे लिए भी ये चुनौतियां बनती है, क्योंकि इन सब कमियों के कारण हमारे लिए, हमारी जो सीमा चौकी है, वहाँ पे जो आधारभूत संरचना होनी चाहिए, जो बीओपी में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसकी कमी है। क्योंकि उतने सामान को हम वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हर बार नहीं कर पाते हैं ताकि बीओपी पूरी बन सके। 338 किलोमीटर बहुत लंबी सीमा रेखा होती है, और उन सारी बीओपीओं को हम पूरी तरह से अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। इन बीओपी में पीने के पानी का भी अभाव है, क्योंकि वहाँ पे बोरिंग करके पानी निकालना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि हम वहाँ पे उस इलाकों में प्राकृतिक स्रोत पे निर्भर हैं। प्राकृतिक स्रोत पानी के जो जल के हैं, उनसे हम लेकर के उनको फिल्टर करके फिर पिलाते हैं। वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस आप लोग? हाँ जी मैडम, उसमें जो मैं अभी वही कवर करना चाह रहा था, बरसात ज्यादा होने से, जंगल इलाका होने से वहाँ पे जहरीले सांप, लीचेज, चोंक और मच्छर वो बहुत ज्यादा है। तो मलेरिया हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब अगर कोई ड्यूटी कर रहा है तो चेहरा खुला रहेगा ही, तो मलेरिया की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। उस तरह की ड्यूटी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर किसी को मलेरिया हो गया तो उसके बाद उसको इवैक्यूएट करना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी हाँ, अस्पताल में सड़क माध्यम से भी परेशानी है। अगर हम उसको हेलीकॉप्टर से भी लाते हैं तो अगर बारिश का मौसम हो रहा है, तो अगर मौसम ठीक नहीं है तो हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं कर सकता है। तो ये हमारे लिए वहाँ की बहुत बड़ी चुनौती है। मलेरिया होना या किसी भी तरह की बीमारी हो जाने से रसद आपूर्ति की भी बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ी चुनौती है हमारे यहाँ। रसद आपूर्ति, दवा
पहुंचाना हमारी बीओपी के लिए। इतनी सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी एक सीमा प्रहरी जो हमारा मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, उसको हम पूरा करते हैं और देश का सर ऊंचा रखने के लिए हम कटिबद्ध हैं। अंतिम क्षण तक हम इसको करेंगे। प्यारे श्रोताओं, देखिए आते जाते हम रास्ते के पास या ड्यूटी पे या कभी कभार घूमने के टाइम बॉर्डर में वर्दी वाले को देख लेते, लेकिन इनके बारे में हम कितना कम जानते हैं। ये क्या क्या करते हैं हमारे लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। कुछ झलकियां अभी हम लोगों ने सुना श्री रत्नेश कुमार जी से। आपको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है हमारे तरफ से। आप थोड़ा समय निकल कर यहाँ आए, हमें इतना जानकारी दी। आगे भी आपसे बहुत कुछ जानने का आशा है, उम्मीद है हमें। धन्यवाद फिर एक बार। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद। And now, let us endeavour to know more about the special places that are nestled in the cozy corners of India's northeast. Today we will go over to the picturesque Tura, which is nestled in the Garo hills of Meghalaya. With a rich cultural heritage and beautiful landscapes, Meghalaya, the abode of clouds, is a blissful state full of heavenly hills, charming lakes, enchanted valleys, mysterious caves, and magnificent waterfalls. On the western part of this state lies the Hillytown Tura. It is the administrative headquarters of the West Garo Hills district and is the ecotourism hub of Meghalaya. Tura boasts undisturbed biodiversity and is shrouded with the fragrance of mountains and greenery. The largest town in the Garo Hills, Tura, will appeal to nature lovers because of the greenery that one finds everywhere in this town. The town blends into the forest rather than intruding into it, and the nearby wildlife even can be seen visiting some of the neighborhoods. Tura is an ideal base for those who seek adventure in the Garo Hills, a town where the authentic Garo way of life is as strong as ever. The town of Tura in Meghalaya has many attractions waiting to get explored, and some of the prominent places include Tura Peak, Siju Caves, Balpakram National Park, Nokrek National Park, Pelga Falls, Rongbang Dar Waterfall, Siju Wildlife Sanctuary, and Napak Lake. During the Wangala season, the 100 Drums Festival in nearby Asanang is a perfect getaway for culture lovers, and Tura is also close to Nokrek National Park, one of the natural gems of Meghalaya. The community-run Chandigre Village Resort will wow you with its faithful representation of tribal life, from the architecture to the food. Apart from treks to Tura Peak and visits to nearby gibbon sanctuaries, visitors can also enjoy the distinctive cuisine of the Garos in Tura. The main residents of Tura are the Garo tribe, and Christianity is the main religion. Almost 100% of the Garos are Christians. There are different Christian denominations like Baptist, Catholic, Seventh-day Adventist, Church of Jesus Christ, Christian Revival Church, and so on. The Garos have a matrilineal society, whereas Hajongs are Hindu. Apart from the Garos, Tura also hosts a variety of other tribes like Hajongs, Kuches, Rabhas, Boros, and other indigenous Assamese communities who are Hindu by religion. There are also a considerable number of immigrant Bengali, Bihari, and Nepali speaking community. There are many varieties of food available. The common one is the traditional Garo food. Traditional Garo food includes boiled rice, different preparations of pork, beef, chicken, and dry fish. The common delicacies are rice cakes called sakkin, made with locally grown sticky rice and sesame seed, and pita, made with crushed sticky rice and jaggery, jakket, made with sticky rice flour and sesame seeds. There are many varieties of locally made drinks. Minil bichi or mi bichi, rice beer, which is made of fermented sticky rice or normal rice, is one of the most common drinks. With Rustam from Shillong, Suparna Saikya for Northeast Diary.
With that, we have come to the end of this edition of Northeast Diary. Do join us next week to hear more stories from this enchanting part of India. Bye-bye.